Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 21st of August 2023. So we are seeing that pulses prices, they may spiral as deficient rain, it mars the sowing. So because of the impact of El Nino on the monsoon, this time we have seen weaker monsoon. So because of that, obviously what we're seeing is that food inflation is increasing, and that has become one of the major concerns in terms of controlling and regulating inflation for even RBI. And the impact, obviously it would be impacting the monetary policy as well, but उसमें भी हमने ये डिस्कस किया है कि इन्फ्लेशन का रीजन जो है, द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, whether it is because of the supply side factors or the demand side factors, वो मैटर करता है कि कौन सी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, monetary policy ki fiscal policy. So that is some another dimension that is again linked to it, and again it is very important at the same time. So in hilly states, the devastation, it continues. We are seeing landslides, flash floods के incidences देखने को मिल रहे हैं, cloud burst के events, they're still continuing. So disaster management becomes a very, very important topic. NDRF का role, SDRF का role, cooperation between them, and again, sync between the planning, all of that is important. And how again, disaster management की जब हम बात करते हैं, तो planning के terms में how unique characteristics, how the plan for hilly states would be unique. And again, सेम चीज के लिए क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना के लिए जो फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिल रहा है इवन इन द प्लेन रीजन्स, वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग कैसे डिफरेंट होने वाला है. सो इसके बाद आफ्टर प्लानिंग अगेन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन पहले स्टेप्स होते हैं, देन रेस्क्यू एंड रिलीफ आर द स्टेप्स व्हिच आर टेकन आफ्टर द डिजास्टर हैज अकर्ड. कावेरी वाटर इशू अगेन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, बट आपको पता होना चाहिए और कौन से वाटर इश्यूज हैं बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स या स्टेट्स एंड सेंटर. दैट इज गोइंग टू बी वन टास्क जो आप फाइंड आउट करोगे. इसके अलावा रेजोल्यूशन का क्या प्रोसेस है व्हेन इट कम्स टू वाटर इशू, इंटर स्टेट वाटर इश्यूज, एंड स्पेसिफिकली आप उस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि कावेरी वाटर इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या बॉडीज बनाई गई हैं. तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट, एंड उनके रोल एंड फंक्शन क्या क्या है. एंड उसके अलावा दी सक्सेस रेट की अगर हम बात करें, इफेक्टिवनेस ऑफ दोज बॉडीज जो बनाई गई टू एड्रेस दिस कावेरी वाटर इशू, वो अभी तक we have like we can't say कि 100% जो issue है वो that has been resolved between these states. Then apart from this, जो basic conceptual चीजें हैं related to it कि which all states or union territories are a party to this issue, ये आपको पता होना चाहिए. And again, रिवर्स ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंडिया में कौन से रिवर्स हैं, उनका सोर्स कहाँ पे फ्लो करती हैं, डैम्स, दैट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. एडिटोरियल पेज पे लेट्स सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द डे. सो जब हम इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर की बात करते हैं तो देयर इज लाइक नीड फॉर अ वेकअप कॉल फॉर द एयरलाइंस. सो क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं करंटली, एंड अगेन potential of growth in the civil aviation industry of India is another important topic. So here we are seeing कि recent crew incidents जो देखने को मिले in terms of जो issues report किए गए of urination of the passengers. So that has been on the rise. So there have been reports of some Indian pilots also who passed away due to cardiac arrest. So rising stress, mental health management, and dealing with that, that is one of the major emerging things
Then apart from this, we talk about, like, the question is ki, do airline managements and the aviation regulator in India, they understand the importance of fatigue and sleep deprivation? So are profits and passenger numbers the only important factor in the airline business? जो employees हैं उनकी health भी important है कि नहीं, या only जो objectives है, जो आपका aim है, that is just profit driven, that is just materialistic? एंड जब हम बात करते हैं इंडिया में जो सेट ऑफ रूल्स हैं ऑन फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस एंड द रेस्ट पीरियड्स, दे आर वन ऑफ द वर्स्ट। जब हम ग्लोबली देखते हैं जो बाकी सेट ऑफ रूल्स है बाकी कंट्रीज में जो ऑपरेट हम वर्क कर रहे हैं, सो हेयर वी नीड सम रिफॉर्म्स. So we need to take into account जो भी risks involved हैं. And India में जो DGCA and airlines है, they would do well to read through and understand the chapter about pilot fatigue and regulation of the airline schedules in the post-war Britain. So again, we can learn from the experiences of other countries as well. जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, फटीग एंड स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन, सो एग्जांपल्स जो हमने देखे, only one involved the death in the cockpit on a passenger flight. When during flight we have seen pilot dying because of cardiac arrest. So mental health, dealing with that, managing with mental stress is very, very important. And obviously you can't put so many lives into risks. So that is something very crucial. And then when it comes to even training of the pilots, so as per one of the studies, it has been known कि जो stress level है during an approach to the land, मतलब during landing an aircraft or especially in the adverse weather events, it can raise the heart level to more than 240 beats per minute. तो even यहाँ पे training of pilots comes into the picture. So adrenal glands, they kick in and body faces severe sugar depletion. So analysis of जो भी ऐसे accidents हुए related to landing of the airplanes involving highly experienced crew identified this as one of the major causes behind those accidents. So sleep deprivation and micro sleep condition for between 5 to 15 seconds during the approach and landing phase have also been identified as a cause for accidents. So subject is an urgent matter to be addressed before the precious lives they are lost. So when we talk about these recruitment of the staff, so pilots, they're not in the same work category as the airline ground staff is, including the management staff. So उनके regarding क्या different किया जाना चाहिए, या obviously क्या different factors हैं जो recruitment of ground level management staff में decision making में impact करते हैं. So that includes here we see that flying crew in India, on the other hand, it gets 1 day off in a week. And जब हम बात करते हैं on ground staff की, they can avail 2 days off every week for 52 weeks. And safe airlines, the worldwide provide at least 2 days off every week and proper rest periods between the flights for the body clock to unwind. So number of basically कितनी holidays and offs in a one particular week दी जानी चाहिए, उस पे भी पूरा, this is a topic of debate. So Shimla mein, why we are seeing the impact of natural disasters, why Shimla is crumbling. So infrastructure development, it has not been climate smart. तो यहाँ पे when we are analyzing this article, आपको ध्यान देना है कौन से keywords use किए जा रहे हैं. So infrastructural development की जब हम बात करते हैं, construction activities की हम बात करते हैं, तो that is being done in an unplanned, unscientific manner. So broadly speaking, this is one of the major causes. So rains, they've recently wreaked havoc in Himachal Pradesh, particularly Shimla mein of late this we are seeing.
Heavy precipitation in the Summer Hill area of the state capital resulted in flash floods, collapse of a temple which claimed over 15 lives. So landslides हो रही हैं बहुत ज़्यादा. That has led to destruction of many buildings in the Krishnanagar area and left 2 people dead. So roads damage हो गई हैं because of landslides. And again, जो traffic management है, that has become a task. So it is not unprecedented, but जो latest intergovernmental panel on climate change report है, वो ये बोल रही है कि जो coastal areas हैं, Himalayas हैं, they are poised to experience rise in the extreme climate events and shift in rainfall patterns. So because of the shift in the rainfall patterns, now why that is happening? That is because of climate change. Climate change के पीछे अब आपको पता होना चाहिए human reasons and natural reasons क्या हैं. So that's how again backward direction में how things are interconnected. So as per this IPCC report, coastal areas or Himalayas, they are more prone to such incidents in future. तो आने वाले टाइम में इनकी जो frequency और intensity है वो increase होने वाली है, that is for sure. अब हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस लेवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन we need to adapt to those changes whatever is happening. जब हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की भी बात करते हैं तो क्लाइमेट स्मार्ट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना इंपॉर्टेंट है. सो शिमला के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हुई है दैट इज नॉट बीन क्लाइमेट स्मार्ट. अगर हम पहले काफी सारे जो इंसिडेंट्स हुए हैं इन दी पास्ट अगर हम उनके पैटर्न को अंडरस्टैंड करें तो वहां से हमें यही पता चलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है दैट इज बीन इन अनप्लान्ड मैनर. एंड अगेन जो वाटर सप्लाई सिस्टम है इवन दैट इज बीन टिंकर्ड विद. सो वी आर सीइंग कि जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं जहां पे हमें डैमेज देखने को मिला है इट इज बीन ऑब्जर्व्ड कि दे आर मोर क्लोजली लिंक्ड टू अ वाटर सोर्स. तो उसकी वजह से जो रिस्क है दैट इंक्रीजेस. सो शिफ्ट इन द बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिली फ्रॉम 1990s that was facilitated by the advent of the reinforced cement concrete. So concretization, even जब हम hilly states में भी कहीं ना कहीं बोले urbanization की बात करते हैं तो वहां पे भी as we talk in general sense concretization increase हुआ है. So prime example of this is transformation is New Shimla region. So वहां पे again this we are seeing using more of concrete which is known for paddy cultivation. So this area it spans numerous water bodies present है इस area में. Empowered by the strength of reinforced cement concrete, people believed कि जो water flow है it could be controlled and it can be directed leading to deliberate human settlements in the water spaces. So riverbeds पे जो construction activities की गई obviously that was something uncalled for and जिसकी वजह से आज हमें damage and loss of lives जो face करना पड़ रहा है it is all because of that. So these are some of the major reasons why we are seeing this thing happening in Himachal Pradesh and specifically in Shimla. So what is this Kacha Devu controversy? Let's understand this. So why is the uninhabited 285-acre islet important to Tamil Nadu and Sri Lanka? And what was agreed upon in 1974 pact between India and the island nation? What has been the stand of Tamil Nadu government over the years regarding this issue? And can Sri Lanka claim the sovereignty over this island or not is the question. So let's understand. So we see on 18th of August, Tamil Nadu ke jo chief minister hai, he revived this debate over the Kachativu, which is an uninhabited and a barren island hai, which is about 14 nautical miles of Rameshwaram, which is there in Tamil Nadu. So he's reiterated
the demand for a retrieval of this islet from Sri Lanka, which will, according to him, put a permanent end to the problems of fishermen of the state. So specifically जब हम South India की बात करते हैं and coastal states की बात करते हैं, so one of the prominent issues is regarding the safety of the fishermen, and specifically Kerala और Tamil Nadu के context में this is more prominent. So जो island है Kachativu Island, this is right now under the control of Sri Lanka, and again जो demand raise की गई है by the Chief Minister of Tamil Nadu is that it needs to be under India's control. And इसके through जो fisherman issue है वो भी resolve किया जा सकता है, that is what he believes. So when did Kachativu become a part of Sri Lanka? So it was during June in 1974. The then Prime Minister of India and Sri Lanka, Indira Gandhi, and Sirim R.D. Bandar Naik, they signed an agreement. So 1974 में एक agreement sign किया गया था between the two countries to demarcate the boundary between the two countries in historic waters from Park Street to Adams Bridge. अब इन दोनों को लोकेट करोगे मैप पे. सो ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया गया था विच स्टेटेड कि एक बाउंड्री आइडेंटिफाई की गई है इन कन्फर्मिटी विद द हिस्टोरिकल एविडेंस, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट्स. सो उस टाइम पे ये अग्रीमेंट कर लिया गया था. सो इट ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि जो बाउंड्री डिसाइड की गई है इट फॉल्स 1 माइल ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द अनइनहैबिटेड Kachativu. So it is on the western coast of the Kachativu islet. So Kachativu इतना important क्यों है? So जो fisher folk है दोनों countries के, they have been traditionally using this islet for fishing. So दोनों countries से जो fishermen हैं, they do the fishing activities around this island. So this is one reason why it becomes important. So though this feature it was acknowledged 1974 agreement में कि जो supplemental pact है 1976 में made it clear कि जो fishermen है दोनों countries के, they shall not engage in fishing in the historic waters, territorial sea and exclusive zone or exclusive economic zones of either of the countries without the express permission of either sides. So this was mentioned in the 1974 agreement also. कि फिशरमैन को परमिशन नहीं दी जाएगी अनलेस उनके पास प्रायर परमिशन हो. तो परमिशन लेना इज इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू डू फिशिंग अराउंड दिस आइलैंड. So what are the reasons behind negotiations between India and Sri Lanka regarding this issue? So Sri Lanka it claimed the sovereignty over this island on the ground. So Sri Lanka ने ये reason दिया कि जो Portuguese हैं they had occupied this island during 1505 to 1658 CE and they had exercised jurisdiction over this islet. So India's contention is कि जो erstwhile राजा है रामनाथ, he had possession of it as a part of his zameen. So according to an article that was published in 1968, it is based on the interview of the erstwhile Raja Ramanta Setupati, who is the Kachativu, was under the jurisdiction of the Zameen from the time immemorial. So during the debate on this matter, Lok Sabha maybe 1974 के time पे, the then External Affairs Minister Swarn Singh, he said कि जो decision है, it had been taken after exhaustive research of historical and other records on the islet. So तब ये बोला गया था पार्लियामेंट के अंदर भी कि प्रॉपर जो हमारे पास हिस्टोरिकल एंड बाकी रिकॉर्ड्स हैं, जो एविडेंसेस हैं अबाउट who basically had this particular island under the control, उसके बाद ही proper ये pact sign किया गया है and agree किया गया है. So how was this 1974 pact received? मतलब reaction क्या था? So the present demand for the Kachativu retrieval, it traces its origin to the opposition that the pact generated in 1974. So basically, जो pact sign किया गया 1974 में, उस time पे there were many people who opposed this decision, and तब से ये demand चली आ रही है since 1974. So during the debates in both the houses of the parliament, most of the opposition, including the DMK party से देखने को मिली, and AIADMK, then Jan Sangh, Swatantrata and Socialist Party, they also protested against this agreement.
सो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऑपोजिशन देखने को मिली रिगार्डिंग दिस। सो अभी रिसेंटली ये इशू फिर से कैसे राइज अप हुआ है, व्हाई डिड इट कम इनटू द पिक्चर अगेन? सो जो कच्चा थी वो इशू है, इट वाज रिट्राइव्ड इन 1991 अगेन बाय द देन चीफ मिनिस्टर जयललिता, demanding retrieval during her Independence Day address. So she later modified her demand to one of getting the island back through a lease in perpetuity. So in the last 15 years, both we are seeing जो former chief ministers रह चुके हैं तमिलनाडु के, Jayalalitha and Karunanidhi, they had approached the apex court also on this matter. So सेंटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस इशू? सो 2013 में यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो क्वेश्चन है ऑफ द रिट्राइवल ओवर दिस कच्चा थीवू फ्रॉम श्रीलंका, इट डिड नॉट राइज एज नो टेरिटरी बिलोंगिंग टू इंडिया वाज सीडेड टू श्रीलंका। तो सेंटर ने बोला कि ऐसा कुछ इशू नहीं इमर्ज हो सकते या क्वेश्चन नहीं इमर्ज हो सकते जब हम बात कर रहे हैं रिट्राइवल ऑफ दिस आइलैंड्स फ्रॉम श्रीलंका, बिकॉज इंडिया का नो पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज ceded to Sri Lanka. So it contended कि जो islet है, it was a matter of dispute between British India and Ceylon. So there was no agreed boundary उस particular point of time पे, and at a matter of which was settled through 1974 and 76 में जो दो agreements किए गए. So December 2022 में सेंटर ने बोला in a reply in Rajya Sabha कि जो कच्चा थी वो है, it lies on Sri Lankan side of the India-Sri Lanka International Maritime Boundary Line. So it added कि जो matter है, it was subjudiced in the Supreme Court. So since it is subjudiced, so इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोला गया of late in December 2022 regarding this. So कच्चा थी वो islet की जो actual location, exact location है, आप लोग उसको भी trace करोगे through the map. So what is RBI's new pilot for the frictionless credit? So let's understand this thing also. How does the central bank it plan to make credit appraisal easier? And again, borrowers or lenders को इसका क्या benefit मिलने वाला है? So we are seeing कि August 17 को RBI commenced a pilot program endeavoring to evaluate the feasibility or functionality of the public tech platform for frictionless credit. सो इससे रिगार्डिंग बेसिकली चीजें और समझी जा रही हैं प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करके पायलट बेसिस पे. सो सजेस्टेड प्लेटफॉर्म इट वुड स्ट्राइव टू इनेबल डिलीवरी ऑफ फ्रिक्शनलेस क्रेडिट बाय फैसिलिटेटिंग सीमलेस फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड digital information to the lenders. So frictionless credit in a way, this is more about how easily you can or how easily borrower can get credit, and at the same time how easily the lender can assess कि credit दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए. So how seamlessly and smoothly that can happen. So उसको promote करने के लिए this is talking about what is RBI doing in order to ensure the availability of a frictionless credit services. सो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है डिजिटल डिलीवरी ऑफ द क्रेडिट. सो डिजिटली आप लोग ऑनलाइन लोन ले सकते हो, और एनी लोन इज प्रोसीडेड बाय अ प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी व्हिच इज नोन एज क्रेडिट अप्रेजल. मतलब आफ्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ ऑफ योर बैंक अकाउंट, तभी आपको क्रेडिट अवेलेबल किया जाता है बाय द बैंक. तो इसके रिगार्डिंग ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है. सो प्रोसेस इट अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट एंड अकॉर्डिंगली प्रिडिक्ट कि प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स एबिलिटी ऑफ रीपेमेंट कितनी है अगर लोन दिया जाता है adhering to the credit agreement. So this pre-dispersal process, it is particularly important for the bank since it would in turn determine their interest income and impact. मतलब proper analysis banks easily कर पाएंगे through this digital platform. So it will bring all of it together in a single place. So सारी चीजें single place पे आ जाएगी, सारी information easily available and accessible होगी for the lenders. So it would be saving time, it would be paperless, and to facilitate frictionless and time delivery of the loans, central banking regulator had instituted a pilot project for the digitalization of the Kisan credit card loans of less than rupees 1.6 lakhs in September 2022 as well. So end-to-end digitalization of the lending process in a paperless and hassle-free manner, इसको पहले भी टेस्ट किया गया था. So keywords पे अगर आप ध्यान दोगे, paperless, hassle-free manner में online end-to-end digitalization के through you can easily get loans. So इसको pilot basis पे टेस्ट किया जा रहा है.
So इसके पीछे अगेन पर्पस क्या सर्व होगा थ्रू दिस, अगर ये प्रॉपरली पैन इंडिया लेवल पे वंस इट इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड, स्टार्ट्स फंक्शनिंग. सो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक कि इम्प्रूव्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर फैक्ट बेस्ड एंड क्रेडिट असेसमेंट जो है क्विकली की जा सकती है. सो इट विल इंश्योर कि क्रेडिट जो है इट इज एक्सटेंडेड टू लार्जर सेट ऑफ बोरोवर्स which have good credit history, and borrowers को भी फायदा होगा by resulting in the lower cost of accessing this capital, and which would translate into productive investment spending. So this would be easy availability and accessibility of formal credit. So easy accessibility, less paper, basically documentation paperless, because ये paperless होने वाला है. तो this would be also translating into higher operational cost for the lenders, which may also get distributed to the borrowers. So अगर हम बात करें of RBI survey regarding कि farm loans देने में कितना टाइम लगता है, so it used to take around 2 to 4 weeks and cost आती थी around 6% of जो loan की total value थी in getting that farm loan. So all in all जो lending platform है, it would bring about reduction on cost and quicker disbursement and scalability भी देखने को मिलेगी. You can see how sludge is lying there on the roads and different vehicles they are struck in between. So Himachal Pradesh, this is from Mandi in Himachal Pradesh on Sunday. After a cloud burst, it wreaked havoc in the area. So इसके पीछे जो reasons हैं वो हम अच्छे से critically analyze कर चुके हैं, and what is required that is also been discussed. Coming to the world page, so रशिया का जो पहला lunar mission था that has crashed, Luna 25, and this was the first lunar mission in 47 years. So it comes to an end, and the pilotless spacecraft was aiming to land in the South Pole area only. So जहाँ पे even Chandrayaan 3 it is going to land very soon. So the objective of Luna 25 was to discover about and to know more about the reserves of frozen water in the South Pole and other precious elements. So हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ नेम याद रखना important है, name and it is linked to which country. So Luna 25 aimed at South Pole of the moon from Russia. Let's see मिनट में कोई important information आज के लिए हमारे लिए है कि नहीं. So after United Nations body, 3 nations ने demand किया है कि India needs to resume the rice exports. So India has taken various measures क्योंकि domestically we are seeing prices escalating. So not just domestically, a global level पे prices increase हो रहे. So that's why even other nations are demanding कि India को exports ban नहीं करना चाहिए. So export curbs भी जो लगाई गई हैं, duty was imposed on rice exports so that export करना expensive हो जाए. And again export prevent करने के लिए duties impose की गई है, export duty on rice.
So Singapore, Indonesia, and Philippines, they are the key diplomatic partners of India. They have appealed to New Delhi to resume the rice exports to their nations following India's decision to suspend non-basmati shipments to check the prices. So El Nino weather pattern का impact हमें not just in India but बाकी सारी countries में भी देखने को मिला है. So rice supplies के लिए Philippines it relies on India. So again banning the exports of rice India के benefit में हो सकता है, but अब when we talk about multilateralism, so how then again we are collectively going to deal with the situation, because then अगर हम सिर्फ यहाँ पे अपने self interest के बारे में सोचेंगे, will not think about the people in other countries when we are also at the same time saying that entire world is one country. So that will be somewhere unjustified. So what else needs to be done? राइस एक्सपोर्ट्स को बैन करने के अलावा और क्या बेटर किया जा सकता है ताकि बाकी कंट्रीज इम्पैक्ट ना हो. सो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी डिमांड किया है, दे हैव सॉट 2 lakh tons of Indian rice for its humanitarian operations amid what it called catastrophic levels of global food insecurity that was triggered because of COVID-19 pandemic and Ukraine war. तो UN World Food Program भी जो डिमांड कर रहा है क्वांटिटी ऑफ राइस दैट वुड बी यूज्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस, अगेन यहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है. So we need to think about something more broader and something which is more sustainable at global level and not just think about the self-interest. So India, world cup biggest rice exporter hai, which is accounting for about 45% of the global rice trade. So here we cannot suddenly ban the rice exports. So even हमारी जो neighboring countries है Bangladesh and Nepal, they are also heavily dependent upon Indian rice, and few African countries are also dependent on Indian rice. So आप लोग सोचना कि what else needs to be done ताकि global level पे भी impact ना हो. Coming to Financial Express newspaper. So ASEAN and India, they are going to start the review of the trade pact today. So here we are also, जब बात कर रहे हैं कि हमारे exports डिक्लाइन हो रहे हैं, तो when we think about कि और क्या किया जाना चाहिए ताकि हमारे exports slow down ना हो, या कौन से ऐसे potential areas हैं जहाँ पे exports grow कर सकते हैं. So one of them is definitely Southeast Asian markets. So ASEAN के context में we are starting again the review of the trade pact. So India का जो trade है with ASEAN, let's understand that first. And trend क्या रहा है यहाँ पे, we have 2010-11 and मतलब decadal data है हमारे पास last 10 साल में क्या trend रहा है. So when we talk about the exports, तो exports increase हुए हैं 25 or we can say $26 billion से $44 billion, and जो imports थे you can see massive increase हुआ है. That was at $31 billion to आज 88 billion dollars हम बोल सकते हैं. So अब ये भी समझना important है कि import किस चीज का ज्यादा increase हुआ है. So trade officials of India and the 10 nation ASEAN bloc, आपको पता होना चाहिए कौन सी 10 member countries हैं ASEAN की. They will be meeting in Indonesia to decide on starting the formal review of the bilateral free trade agreement that was signed between the two countries more than 13 years ago. So it's important to review it again, revisit it again, जो reforms and changes required है वो किए जाने चाहिए. So that is the thing. Members of ASEAN यहाँ पे already mentioned है. You can just go through it and again location भी देख सकते हो, so वो आपको थोड़ा visualization के through retain करने में help करेगा. Apart from this, ASEAN India Trade in Goods Agreement,
2010 में this came into force, creating one of the world's largest free trade regions. So जब हम बात करते हैं इंडिया की क्या concerns हैं actually, so we see कि India is wary of the countries that are not part of the trade agreement, routing their products through ASEAN. So grouping it as much deeper economic engagement with China through the ASEAN-China Trade and Goods Agreement. That is one of the concerns. And in the ASEAN Trade Agreement, India agreed to eliminate tariffs on 75% of its tariff lines, and tariff reductions covered 88% of its lines. एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडिया took a defensive position and kept its duties high while giving away bigger concessions on the industrial products. So why countries want to join BRICS? So they say कि they aspire for unfinished business of the last century. So as nations of the world, they rise to complete the unfinished business of the last century. They aspire to join five-nation BRICS grouping. So the theme of the seminar, जो भी recently हुआ, that was harnessing synergies, India-Africa cooperation for prosperity in the BRICS, African Continental Free Trade Area Secretariat Landscape. So ये जो unfinished business जो phrase use किया जा रहा है, what it is actually about, मतलब क्या है idea of the unfinished business? So that is moving away from the fight for freedom and independence from the colonial rule to economic prosperity. So this is what the unfinished business is about. And this is one of the main reasons why more nations, they want to join the BRICS. So soon we're going to have national e-commerce policy. So once we have it, we'll be doing the critical analysis. And till then you can think about what needs to be part of this policy. So it is being under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which is helming it. And once we have it, we'll definitely discuss it as well. Coming to Indian Express, so let's see the new topics that we've not taken up so far. So star ratings की जब हम बात करते हैं, Bureau of Energy Efficiency's role, star ratings again, what do you understand through them? ये आपको समझना important है. इसके अलावा here it is in the context of air conditioners.
So to meet the energy efficiency parameter for 3-star, basically this has been kind of an warning issued for the consumers that Hitachi split room air conditioner model number this, it has failed to meet the energy efficiency parameter for 3 stars. So it's important for you to make the right choice as consumers. एंड जब भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हो, सो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी इम्पोर्टेंट है कि स्टार रेटिंग क्या है उस पर्टिकुलर गुड की, कमोडिटी की. सो बीईई स्टार लेबल ऐप होना चाहिए. एंड अगेन ऑथेंटिसिटी के लिए ये चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है. बाकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे लिए एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, नेचर ऑफ दिस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इट इज अंडर द, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो नेचर एंड अगेन मेन रोल एंड फंक्शन है वो आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रीड कर सकते हो. सो हंगर चैलेंज की जब हम बात करते हैं तो जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ दैट कैन इंक्रीज इन दी फार्म प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प एंड द माल न्यूट्रिशन. तो फार्म प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी होगी एंड दिस वुड आल्सो हेल्प अस इन एंडिंग माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम. So multi-dimensional poverty index, this we've already seen who prepares it and indicators क्या है, इंडिया की position क्या है. So this is something very technical and conceptual. ये आप लोग खुद find out भी कर सकते हो. ट्रेंड के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, लास्ट 5 years का इंडिया का क्या ट्रेंड रहा है as far as this index is concerned. देन जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं इन पीपीपी टर्म्स, तो इंडिया किस लेवल पे है, अगेन वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में अगेन जो डिफरेंट कमिटीज बनाई गई हिस्ट्री में, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनके रिकमेंडेशंस, व्हाट इज राइट नाउ कि हम इंडिया में कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी. दिस वी हैव ऑलरेडी लाइक डिस्कस्ड इन डिटेल, दिस इज नॉट समथिंग न्यू. यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं दैट इज हाउ जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ कैन हेल्प अस. So NFHS 5 का जो डेटा है, it shows कि 32% children they were underweight, 35% were stunted, 19% were wasted. So although India it made reasonably good progress in reducing the infant mortality from 57% to 35%, and progress on other indicators जब हम malnutrition की बात करते हैं, so that is not very satisfactory. So this is one of the real challenges at the ground level. So we are on track to abolish poverty next 5 to 10 years. Hunger की बात करते हैं तो at least in terms of food availability we have done well. तो अब बात आती है nutritional food security की. Food security is something that we have achieved and we are in good position in the context of that. But nutritional food security becomes the new concern. So green revolution से जो हमें फायदा हुआ, this we already know. जो बाकी स्कीम्स गवर्नमेंट रन कर रही है, पीडीएस सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वाइट रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो दिस इज देयर. सो malnutrition, it is still on the table, it is still a concern, I should say a major concern, especially amongst children and even women also. So data हमने अभी देख लिया है. Apart from this, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते तो कहीं ना कहीं वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं इस चीज पे, एंड इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, चाहे आप हीट वेव की बात करें, फ्लैश फ्लड्स की बात करें, दे आर ऑल्सो बिग चैलेंज नॉट ओनली टू इंडियाज फूड सिस्टम बट ऑल्सो टू पॉवर्टी एलिवेशन ऑल्सो. सो जो सो फार हमने गेन्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, दे कुड बी रिवर्स्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द इम्पैक्ट्स बिकॉज ऑफ दैट. सो क्वेश्चन आता है कैसे इन सारी चीजों से एक साथ डील करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ में हो रही है, तो मेन चैलेंज वही है डीलिंग विद देम इन टैंडम साइमल्टेनियसली.
एंड जो इम्पैक्ट बॉटम पॉपुलेशन पे हो रहा है, अगेन that is also something that needs to be a priority. So one simple answer would be to keep focus on accelerating economic growth and making it more inclusive. तो दोनों elements होना बहुत important है, and inclusive economic growth is the answer अगर हमें short में बोलना है. So gender related or gender led development in India, citing the case of India having more women pilots than any other country. अब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि women led development कौन से areas में अभी तक हमें देखने को मिली है, then what needs to be done. Then women participation rate in our labor force, it is pitiably low at about only 30%. So we can focus on improving the literacy rate, providing quality education to the young women, along with their skill formation. Several of India's problems जो है like poverty, hunger, malnutrition, they can be solved together. And again, feminization of agriculture देखने को मिला है. So even there, improving the productivity of agriculture is again going to help women a lot. And जो उनके repercussions हमें देखने को मिलेंगे ना, that would be very positive for us. जो main challenges हैं directly वो address हो जाएंगे. So again, more research and development is required. Expenditure for that is required in terms of agriculture to make abundant food available at reasonable competitive price. Not just food availability, but वो reasonable competitive price पे भी available होना important है, because then we have the challenge of inflation also at the same time. So what the Luna 25 crash, it tells us about the moon landings. So again, India के लिए इस mission से क्या importance है, how it can be important for India is what lessons can we basically learn from this mission? Why did it fail? And obviously we don't have to repeat those same mistakes. So देखा ये गया है कि जो पहले भी कंट्रीज लाइक इंडिया, इजराइल, जापान एंड रशिया ने भी जो रिसेंटली मिशन दिया, लॉन्च किया, दैट वाज अगेन मून लैंडिंग था मेन टारगेट. मून मिशंस जो लॉन्च किए उनमें जो एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली है, दैट इज ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज, ड्यूरिंग द लैंडिंग प्रोसेस. सो उस टाइम पे देखी गई है मोस्ट ऑफ द क्रैशेस इसी टाइम पे विटनेस हुए हैं. तो वो क्यों हो रहे हैं वो समझना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. So, controlling the speed, all of that is important. And हमारा Chandrayaan-3 mission जो है, that is soon going to land, and I'm sure India is going to again make a history here as well. So G mustard की अगर हम बात करें, genetically engineered mustard, it is less pungent, and how is it going to be more useful? So canola quality mustard variety, a lot of effort in the past 2 decades, including by the scientists at the Delhi University Center for Genetic Manipulation, the crop plants, and the Indian Council of Agricultural Research. They've gone into breeding of the rapeseed mustard line, the so-called canola quality. So gene editing breakthrough was achieved. इतना हमें टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है. अगेन क्रिस्पर cas9 कैसे वर्क करता है ये पता होना इम्पोर्टेंट है. इस पे ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, बट स्टिल यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है. सो वी सी कि
जो न्यू जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंड एडिटेड, आई शुड से इंजीनियर्ड या एडिटेड आप वर्ड यूज कर सकते हो, मस्टर्ड लाइन्स जो हैं दे आर transgenic free or they are non-genetically modified. So they contain no foreign genes like those of the Bacillus thuringiensis bacteria जो कॉटन में या जो बीटी कॉटन में प्रेजेंट है. तो जो लो सीड हाई लीफ ग्लूकोसाइनोलेट मस्टर्ड लाइन्स है वो जिनोम एडिटेड है एज अपोज टू जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक प्लांट्स. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी है, एंजाइम है, वो यूज किया जाता है फॉर नॉट फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन. So जो genetically modified crops है, they are currently subjected to stringent environmental release. मतलब जो regulations है, they are very strict as of now. And this is like not just for commercial cultivation, but even जो field trials हैं या seed production है, उस case में भी we are seeing कि regulations जो हैं बहुत strict हैं. And then there are also concerns about the human safety. अगर genetically modified क्रॉप वैरायटीज हम कंज्यूम करेंगे तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स. सो इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड मस्टर्ड वैरायटी. सो सिंस इंडिया जो है इट इज अ ह्यूज इम्पोर्टर ऑफ द एडिबल ऑयल्स, तो इफ वी हैव दिस बेसिकली दिस वैरायटी बिकम्स सक्सेसफुल, तो जो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो कम हो जाएंगे. सो दिस वुड बी हेल्पिंग अस इन मल्टीपल वेज. एंड मस्टर्ड एंड सोयाबीन जो है जो इंडिया के मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड ऑयल सीड क्रॉप्स भी हैं. दे आर प्लांटेड एनुअली ऑन 9 million and 12.5 million हेक्टेयर्स रिस्पेक्टिवली. देन आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी स्टेट्स में ज्यादा कल्टिवेट किए जाते हैं, एंड अगेन क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी इंपॉर्टेंट है विच आर सूटेबल फॉर देयर कल्टिवेशन. सो रैगिंग की हम बात करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी सीइंग चिल्ड्रन स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड. तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है ऑन रैगिंग. सो 2001 में केस हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग रैगिंग व्हिच इट टर्म्ड द menace pervading the educational institutions of the country. तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था. एंड कोर्ट ने बोला कि रैगिंग इज डिफाइंड एज एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or indisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm, or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student, or asking the students to do any act or perform something which students will not do in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or the psyche of a fresher or a junior student. सो कोर्ट ने उस टाइम पे एंटी रैगिंग गाइडलाइंस भी इशू की गई थी, एंड इसमें बेसिकली इट इंक्लूडेड सेटिंग अप अ proctoral committees to prevent ragging and internally address जो भी complaints आएंगी against ragging. एंड अगर ऐसा हमें मतलब देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट का ही कहना था कि फ्रैगिंग इट बिकम्स अनमैनेजेबल, मतलब अगर ये नहीं मैनेज हो पाया, इट अमाउंट्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, द सेम आप उसको फिर पुलिस को भी रिपोर्ट कर सकते हो. तो 2009 में एक और जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ पे बोला गया कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट की थी विच वाज हेडेड बाय फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर, एंड कमेटी की रिकमेंडेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. दे वर सबमिटेड टू यूजीसी. देन वी हैविंग यूजीसी गाइडलाइंस भी हैं ऑन एंटी रैगिंग. सो ऑफेंस रैगिंग एज एन ऑफेंस की अगर हम बात करें तो रैगिंग कोई एक स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है.
but it can be penalized under several provisions of IPC. So ये सारे topics हम already cover कर चुके हैं. So that's all for today, and thank you so much for joining us. Do subscribe to the channel and kindly like the video. Thank you so much.